अस्सलामुअलैकुम। इस ट्यूटोरियल में we'll cover uh, four basic things. One is plotting density functions and probability distribution functions, यानी कि किसी भी डाटा से डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाई जाए, मतलब हिस्टोग्राम्स, और कैसे चेक किया जाए कि वो एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट वुड बी टू एस्टिमेट द क्वांटाइल फंक्शंस of a distribution. We are using Weibull distribution as an example. ठीक है, for which we'll also generate random variable, and lastly we would find a value at risk. First of all, to begin with, we need to use a few libraries. ठीक है, तो ये तीन libraries हैं which are very much needed to work with Weibull distribution. First है Weibull fit. ये किसी भी डाटा पे Weibull distribution फिट करने के लिए यूज होती है. सेकेंडली वी हैव स्टैट्स. इस पे ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उनको फिट कर सकते हैं एंड ऑल. ठीक है, एंड देन वी हैव मैथ्स. ओके, द फर्स्ट थिंग इज प्लॉट a density function or distribution function using Weibull. First of all, we need our data. In this case, we get our own data, which is Weibull, which follows Weibull distribution. But you may use your data here, right? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो डेटा जनरेशन वाला स्टेप है. अगर आपका डेटा गिवन हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं. ठीक है, देन वी वुड प्लॉट द हिस्टोग्राम यूजिंग हिस्ट कमांड. ब्रेक्स बता रहे हैं कि कितने कॉलम्स बनाने. कॉल कलर के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, कलर इज रेड ऑफ द बार्स. एक्स लैब एक्स लेबल, एक्स शो करना है. मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ. राइट, एज यू कैन सी, जो हमारा मेन टाइटल था हिस्टोग्राम विद वेबल, वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट. सिमिलरली एक्स लैब एक्स लेवल यहाँ पे विजिबल है. वाई लेवल डेंसिटी वो यहाँ पे विजिबल है. तो हिस्ट की कमांड यूज करके हम इजीली हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं. फिर हमें सीक्वेंस बनानी होती है कि ताकि एक्स की, जो हमारा डेटा है एक्स, उसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक एक ऑर्डर्ड सीरीज जनरेट हो जाए, राइट. तो हम उसको बना लेते हैं मिनिमम से मैक्सिमम तक. ठीक है, जस्ट टू शो यू कि एक्सपर्ट कर क्या रहा है, मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि एक्स की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक एक यूनिफॉर्मली स्पेस डेटा जनरेट कर. ठीक है, जबकि अगर मैं आपको एक्स की वैल्यूज दिखाऊं, दे वर रादर स्कैटर्ड. ठीक है, जब हम एक्सपर्ट बना रहे हैं तो थोड़ा ग्राफ के लिए ऑर्डर्ड भी बना. अब ये जो ऑर्डर डेटा बनाया है, अब इस पे वी वुड फिट वेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये वाई फिट आ गई. ठीक है, देन वो जो डिफरेंस हमने निकाला है हिस्टोग्राम का, उस हिस्टोग्राम के अंदर हम वाई फिट को थोड़ा सा बेहतर फिट कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू हिस्टोग्राम लाइक दिस. आखिर में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इस तरह फिट करना है कि लाइंस का फंक्शन होगा, यानी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज लाइन इसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे, राइट. एज यू कैन सी, वी हैव अ लाइन. ठीक है, इस लाइन के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मेरा एक्चुअल डेटा का हिस्टोग्राम है. जितने क्लोज होंगे उससे पता चलेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन उतनी फॉलो कर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ज्यादा ब्रेक्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 15, तो मुझे सिर्फ इसको ब्रेक्स को 15 करना है. आप ये देख सकते हैं, ज्यादा क्लियर आपको रिजल्ट नजर आ रहा है. ऑल्सो, व्हाट इफ अगर मैं वेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम नहीं कर, तो मुझे सिर्फ ये कमांड चेंज करनी पड़ेगी, यूज योर पीडीएफ हियर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो मेरा डेटा, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट,
मीन कोई भी हो सकता है, मैं अपने डेटा का मीन डिफाइन कर लेता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करके बस ये दो चीजें मुझे करनी, ठीक है। और जैसे ही मैं, ऑलराइट, तो देखिए फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू यूज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हियर, इससे बस कमेंट आउट करना है, राइट। और अब ये इसी वेरिएबल डाटा पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके दिखाती है, राइट, जस्ट बाय चेंजिंग दिस फंक्शन टू डी नॉर्म, और नॉर्मल के जो रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स हैं वो रखें। ऑब्वियसली ये फिट नहीं होगी क्योंकि हमारा डेटा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था। So this is how, just by changing this command, you can plot any sort of distribution, right? अच्छा, ये तो पूरा सेटअप था टू प्लॉट द डेंसिटी ऑफ वेरिएबल डेटा, और डेटा पे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करके कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल की एग्जांपल दी, आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है चेक करनी है उसका पीडीएफ यहाँ पे कमांड रखें आर के अंदर, एंड देन इट वुड ऑटोमेटिकली बी प्लॉटेड। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन if I want to plot the quantile of, estimate the quantile of Weibull distribution, I need to use the command qweibull. This is available in math library, मैं दिखा देता हूँ, right? सॉरी, स्टैट लाइब्रेरी में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू कैलकुलेट pth quantile, p कुछ भी हो सकता है, 0.1, which in other words is 10%। We just need to put the value of p, यहाँ क्वांटाइल बताना है, ये पैरामीटर्स हैं, वेयर टू वही वेरिएबल के पैरामीटर्स होते हैं, टू शेप की वैल्यू है और की वैल्यू 1 है, ठीक है। जस्ट रन इट अप, रन करते ही विल गेट योर आंसर। ये क्वांटाइल आपके सामने एस्टिमेट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द क्वांटाइल फॉर अ सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल मुझे 5% से लेके 95% तक क्वांटाइल कैलकुलेट करने हैं, 5 के डिफरेंस से। लेट मी टेल यू हाउ। फॉर एग्जांपल ये देखें, पी की वैल्यू सॉरी 0.05 से 95% तक, राइट। अब पी की वैल्यू 5% से लेकर इस तरीके से आ रही है। मोर क्लियरली if I write 100p, then that clearly shows कि एक परसेंटेज में क्या है। अब इन सब के लिए एक साथ क्वांटाइल कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे बहुत इजीली मैं एक काम कर सकता हूँ। ये देखें, ये क्वांटाइल्स की वो रेंज क्रिएट की और उसके बाद क्यू वेबल में रख के डायरेक्टली कैलकुलेट। ग्राफिकली अगर मैं इनको दिखाऊं, तो आई कैन जस्ट कमांड, I can have as quantiles, and when I plot these quantiles with p, where p is the x variable and quantile is the y variable, I can, this gives us an idea of how it works. This is the quantile and this is the value. Then I would go to our third objective, which is generating or simulating Weibull based random variable. In order to create one such variables, we use the command rvariable, which is also available in stats library, as you can see here. We still use the same variable distribution, which has 2 scale 1. Now assume that I want to generate a sample of 1000 observations. All I need to do is to write this command, run it up,
this gives me a Weibull random variable, right? This is how it is. अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, you could plot it up. Now comes the question, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में वेरिएबल वेरिएबल है या नहीं? वेरी सिंपली, मैंने जब भी ग्राफ की कमांड्स को देखा था, मैं उनके थ्रू चेक कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने वेरिएबल जो मैंने अभी जनरेट किया है उसको x में स्टोर कर देता हूँ. लेट्स से आर रैंडम वेरिएबल इज x. अब मैं अगर इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करूं, तो वुड इट फॉलो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन? ये आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट ये सब कर भी रहे, राइट? अच्छा, then, then we are on to the last part. Not really the last one. Uh, the second last part is about fitting a Weibull distribution. Even if you know that a certain data frame follows Weibull distribution, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पैरामीटर्स को फॉलो कर, राइट? So you just need to use this command, fit distribution plus, available in stats package. Now some command. Using this command, you can calculate the maximum likelihood estimates of Weibull distribution. ठीक है? ओके, अभी अभी मैंने अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था RV. All I need to do is to run this. ठीक है, एरर्स आते हैं, but often they are not significant. मैंने इसको रन करके देख लिया तो मुझे पता है एरर्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है. अब इसको रन करके देखें, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है ऑलमोस्ट. शेप वाज 2 और स्केल 1 था, so you can see that almost ऐसे ही, right? Now I would come to the last part, that is finding value at risk. But let me give you an idea of what value at risk is. Alright, if you consider a profit or loss distribution of returns, so we know that value at risk is the value uh, behind which we have a certain percentage of error. For example, alpha is 5%. तो मुझे यहाँ पे ये जो वैल्यू है अल्फा, इससे पहले देर इज अल्फा परसेंट चांस that company would make a loss or a profit below that point, right? In other words, we can say that value at risk is just quantiles. So quantiles निकालना is very easy. ठीक है, all we need to do is to go there, copy the formula for quantiles. Quantile is again using the command qvable. For example, if I want to calculate the value at risk at 5%, I would just plug in the value 0.05. That would give me the result. Now the variable quantile holds the value of value at risk. Let me rename it. What do I mean by this? By this I mean that there is 5% chance that variable will go to that value at risk value. वो वेरिएबल इस वैल्यू एट रिस्क वाली वैल्यू से कम वैल्यू रखेगा, 5% चांस. ठीक है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इट फॉर एनी वैल्यू, बी 10%, बी इट क्वांटाइल, राइट? वी जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू, व्हिच इज 10%. ये वैल्यू एट रिस्क, यहाँ से आपको
अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, व्हाट इफ आई एम नॉट वर्किंग विद वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आर का एक कन्वेंशन है, जब भी मुझे डेंसिटी निकालनी होगी इट्स रिप्रेजेंटेड बाय डी। फॉर एग्जांपल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग डी नॉट, क्वांटाइल्स के लिए वी ऑलवेज यूज क्यू, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट नेम होगा जैसे वेबुल या नॉर्मल जो भी। जनरेट अ सर्टेन रैंडम वेरिएबल, यूज द वर्ड आर। इस तरह से आप फंक्शंस को इजीली डिकोड कर सकते हैं। और अगर मैं सीडीएफ की बात करूं, लेट मी राइट देम अप, फॉर डेंसिटी, Q is for quantiles, R is for similarly if I want to calculate the CDF of that particular distribution, so this is how. अगर मैं वेबल ऑब्वियसली यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल जितनी जितनी जगह नॉर्मल है दैट वुड बी रिप्लेस बाय वेबल। इस तरह से आर की सारी कमांड जो है उसका कन्वेंशन यही है। दैट इज इट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो और मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।